So now we can say the classification of goodwill. Goodwill can be classified in two ways. One is purchase goodwill and another is self-generated goodwill. What is purchase goodwill? As I told you, purchase goodwill is that goodwill which is acquired by a firm for a consideration. मतलब आपने कोई amount pay करके, whether paid in cash or in kind, कोई amount pay करके आपने goodwill purchase किया है, तो that's called what purchase goodwill. For example, what is written? When a business is purchased and purchase consideration is more than the value of net assets. मतलब फॉर एग्जांपल असेट्स माइनस लायबिलिटी, इसको बोलते हैं नेट एसेट्स. मतलब किसी बिजनेस की नेट एसेट्स है फॉर एग्जांपल 10 लाख, यानी बिजनेस की एसेट्स है 12 लाख से फॉर एग्जांपल, लायबिलिटीज है 2 लाख. सो 12 माइनस 2 नेट एसेट्स कितना है 10 लाख. लेकिन अगर आपने उस बिजनेस को परचेस करने के लिए पे किया 11 लाख, तो आपने 1 लाख रुपीस एक्स्ट्रा किस चीज के दिए? गुडविल के दिए. अंडरस्टूड? सो द वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स, it is what? When the purchase consideration is more than the value of net assets, the difference amount is the value of purchased goodwill. That is called your purchased goodwill. So what are the features of purchased goodwill? Number one, it arises on the purchase of the business. Purchase goodwill कब होता है? When you are purchasing business, then only you just have to pay for the goodwill. Second one is, since the consideration is paid for it, मतलब हम amount pay करते हैं, it is accounted on the books of account, मतलब उसको हम books of accounts में record करते हैं. Third one is what? It is shown in the balance sheet as an what? As an asset of the business. Next is, valuation of goodwill is a subjective assessment, but it is ascertained when both purchaser and seller agree to the valuation. समझ रहे हो? मतलब ये subjective है, मतलब इसकी वैल्यू exactly शायद ना भी हो, but it can be ascertained. मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट हम डिसाइड कर सकते हैं कब? when both purchaser and seller agree to its valuation. एक पर्टिकुलर अमाउंट पे एग्री होते हैं, that will be what? Goodwill value. It is amortized at the earliest but not later than its useful life. बराबर? मतलब गुडविल को आपको उसकी यूजफुल लाइफ में ही अमोर्टाइज करना है, मतलब राइट ऑफ कर देना है एज एन एक्सपेंस, थोड़ा थोड़ा करके हर साल पीएनएल अकाउंट में दिखाना है. अंडरस्टूड? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, intangible assets prescribes that normally intangible assets should be written off within 10 years. बराबर? जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है कि गुडविल या कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स हो उसको मैक्सिमम 10 इयर्स में आपको क्या कर देना है? अमोर्टाइज कर देना है. ओके. एंड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द परचेजर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट. मतलब परचेजर को इस कंपनी में कितना फ्यूचर प्रॉफिट दिख रहा है या प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कितनी है, उसके हिसाब से गुडविल की वैल्यू डिसाइड होती है. अंडरस्टूड? परचेज गुडविल डिसाइड होता है. उसके बाद है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज गुडविल. सो एज आई टोल्ड यू, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल which is not purchased for a consideration, but it is earned by the efforts of the management or partner. मतलब for example, if I am running my class for successfully since last 10 years, 15 years, and if the students are coming to me just because listening to my class name, then what does it mean? That I am having goodwill. Understood? So that is called what? Self-generated goodwill. Understood? So it is internally generated goodwill which arises from a number of factors. Which are those factors जो हमने पहले डिस्कस किए, like favorable location, efficient management, good quality of products, etc. Okay, that a running business possesses, due to which it is able to earn high profits. Okay, so this is what self-generated goodwill. Now, what are the features of self-generated goodwill? Number one, it is generally internally. It is generated internally. That means generated over the years. It is not, happens overnight. Second one, its valuation is subjective assessment of the valuer. ठीक है? ये किस पर डिपेंड करती है वैल्यूएशन? On the assessment of the valuer, being not based on an evidence. ठीक है? इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी पता चलती नहीं है. नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 प्रिस्क्राइब्स दैट self-generated goodwill is not accounted as an asset. इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते नहीं है. Why? Because इसकी हमने कोई पेमेंट किया नहीं है, इसलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. So that is called what? Self-generated goodwill.